Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Paul Thotham and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से जुड़े ताज़ा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर एसपी शर्मा। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद हैं पॉल थॉटम। Falling for a third straight day, Sensex tanks 587 points, Nifty plummets 177 points, the rupee weakens 15 paise against the US dollar. Retirement fund body EPFO restores commutation of pension under the Employees Pension Scheme, and Prime Minister Narendra Modi to reach Paris today, Indo-France bilateral talks scheduled in the evening. घरेलू शेयर बाजार में लगातार तीसरे सत्र में आज गिरावट। सेंसेक्स 587 अंक लौटका, निफ्टी 177 अंक नीचे आया। $1 की तुलना में रुपया हुआ 15 पैसे कमजोर। ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना के तहत कम्यूटेशन प्रणाली को फिर से बहाल किया और भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय मसलों पर वार्ता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस पहुंचेंगे। घरेलू शेयर बाजार में लगातार तीसरे सत्र में आज गिरावट हुई। आईटी सेक्टर को छोड़कर चौतरफा बिकवाली की गई और प्रमुख सूचकांक 1.5% से अधिक नुकसान के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 587 अंक यानी 1.6% कम होकर 36,473 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 177 अंक यानी 1.6% की गिरावट के साथ 10,741 दर्ज हुआ। विस्तृत बाजारों पर ध्यान दें तो छोटी और मझोली कंपनियों को भी नुकसान उठाना पड़ा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 1.4% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 2.2% की गिरावट देखने को मिली। At the stock markets, falling for the third straight day, the Sensex at the Bombay Stock Exchange tanked 587 points or 1.6% to close at 36,473 today. The Nifty at the National Stock Exchange also plunged 177 points or 1.6% to 10,741. In the broader market, the BSE Mid-Cap Index dropped 1.4% and the Small Cap Index slumped 2.2%. Market breadth on the BSE was weak, with nearly 4 declining shares for every single gainer. Among sectoral indices, the Realty Index tanked 6%, the Metal Index plummeted 3.5%, the Oil and Gas Index plunged 2.6%, the BankX 2 slid 2.5%, the Auto Index dropped 1.6%, the Telecom slipped 1.5%, the Power Index fell 1.4%, Healthcare Index declined 0.5%, and the FMCG and Consumer Durable Index too shed 0.1%. But IT Index, the savior, inched up 0.3% and the Tech Index ended flat. Among specific stocks, HDFC Bank fell 2.4%, HDFC declined 2.5%. Among index stocks, ITC slipped 0.6%, ICICI Bank fell 3.2%, Reliance dropped 1.9%, but Tech Mahindra gained 1.5%, Dr. Reddy too saved us with 1.1% rise, TCS added 1.3%, Hindustan Unilever advanced 1%, and HCL Tech moved up 0.6%. Dr. Sharma, can we take your views on a constantly sliding motion that the stock market has taken this approach? What is your opinion? Why is this happening? Majorly, global markets are also in trouble because there are a lot of news once again that US and China war is once again
in the trade scenario is going to escalate, that they are now in the actual trade war, and trade war may convert in the currency war also. And US dollar is also gained a lot because of some weakness in the other markets, and rupee also tumbled. So that was the panic that markets perceived, and markets declined significantly from the previous level yesterday. So at this juncture, I believe markets are expecting a lot from the government, that there must be some stimulus for the slowing down economy, majorly the sectors like auto sector and the other vulnerable sectors of the economy. And that's why markets are not able to gain strength at the higher level also, though showing volatility, sometimes 11,300 and again below the 11,000. So this is the trajectory of the markets during the last few weeks, that markets are going up to the level of 11,200 and again at the downside in 10,700 or 800. But I believe going forward, that because fundamentals are still strong and growth projections are high, more than the advanced and developing economies. So at this juncture, if the markets are supported by some stimulus, like the economy is facing slowdown, that is also becoming visible. So at this juncture, if government is coming out with the stimulus package for the vulnerable sectors, then that will again rejuvenate the markets, and a lot of liquidity is there from the RBI side, and repo rate is already reduced. So at this juncture, markets need a strong hand holding by the some stimulus from the government. बाजार पर हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 15 पैसे कमजोर हुआ, 71 रुपए 81 पैसे के स्तर पर आ गया। हम बाजार पर चर्चा करें उससे कह लें पहले रुपए पर आपकी यानी कह लें कि ध्यान को आकृष्ट करना चाहेंगे। रुपए का वर्तमान स्तर क्या दर्शा रहा? रुपए में पिछले कुछ सत्रों में हमने कमजोरी देखी है, 71 रुपए 81 पैसे के स्तर पर आ गया। कहाँ किधर जा रहा रुपया? देखिए, रुपए में खासकर जब US डॉलर में स्ट्रेंथ बनती है, तो रुपये में ऑटोमेटिकली एक ऑर्डरली डिक्लाइन आता है। खासकर जो दूसरी जैसे चाइना की करेंसी भी पीछे डेप्रिशिएट हुई, तो उसी वजह से जो पूरी जो इमर्जिंग मार्केट करेंसीज हैं वो काफ़ी मतलब चैलेंज्ड हैं, और रुपी इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। तो इसी संदर्भ में ये बताना चाहूँगा कि रुपी के लिए कोई ऐसा मेजर थ्रेट तो नहीं है कि इसमें फ्री फॉल होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि वॉलेटिलिटी जो है मार्केट्स में, जब मार्केट्स से कैपिटल फ्लो आउटफ्लो होता है तो रुपी के ऊपर प्रेशर आता है। एक तो फर्स्टली रुपी एक ऑर्डरली वे में जिस तरीके से डॉलर स्ट्रेंथ की वजह से उसमें डिक्लाइन, फिर जब कैपिटल आउटफ्लो भी होता है तो रुपी में और गिरावट आती है। तो उसी संदर्भ में जो रुपी में काफ़ी एक डेप्रिसिएशन हमने देखी है, तो उसी की वजह है। कोई उसमें ये नहीं है कि इकोनॉमिक फंडामेंटल्स या हमारी वीकनेस की वजह से या इकॉनमी में कोई बहुत बड़ा चैलेंज आ गया उस वजह से रुपी टंबल हुआ है, लेकिन ये एक टेक्निकलिटीज़ जो कि एक डॉलर की स्ट्रेंथ की वजह से और दूसरा जो कैपिटल आउटफ्लो की वजह से, जो मार्केट में करेक्शन आने की वजह से है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा देर तक ऐसी वॉलेटिलिटी या रुपी में डिक्लाइन नहीं रहेगा, ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है। रुपी वापस से इसी स्तर के आसपास, मतलब 70 के आसपास वापस स्टेबल करेगा। Dr. Sharma, you talked about vulnerable sectors, and I'd like you to explain a little broadly what do you mean by vulnerable sectors? Which are the ones that you qualify them as? Like most of the sectors are demand driven and driven by the policy environment, like the auto sector, that is the demand driven. If demand is not there, then the sector faces a lot of challenges. So if the demand is boosted by some stimulus and some measures that we have to revive this sector for the growth of the economy, for employment creation and overall positive momentum in the economy, then we have to come out with some hand holding to the sector. So that's why I am calling these sectors that these are vulnerable of the something like they create the immediate demand. So that's why. And second is the few sectors are like labor intensive sectors. Though the government is doing a lot for the labor market and there are a lot of reforms in the labor laws, but still
lot needs to be done going forward, that there must be flexibility in deployment of labor, majorly for the MSME sector, because sometimes because of the stringent labor laws and rules, they are not able to deploy more and more workforce in their So factories. that's primarily also So- because of liquidity in the market and for credit. So what do you feel? Is I that think one of the both reasons why both this the is? things should go hand in hand. Only liquidity can't do everything, but liquidity should be supported by the positivity in the policy environment and strong hand holding to the some sectors of the economy. डॉक्टर शर्मा, आपने चर्चा की कि हमें सुधार करने होंगे, ध्यान देना होगा, तो किन क्षेत्रों पर ध्यान की अपेक्षा आप रखते हैं? और स्टिमुलस देने की आपने चर्चा की, स्टिमुलस कहाँ होना चाहिए, किस रूप में होना चाहिए? देखिए, जो ध्यान हमें देना चाहिए, फर्स्टली तो पॉलिसी इन्वायरमेंट के ऊपर सरकार ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है, और उसमें और ज़रूरत कहाँ पे है, खासकर एमएसएमई सेक्टर के ऊपर. अभी भी जो एमएसएमई सेक्टर है, काफ़ी चैलेंजेस हैं, खासकर जो लिक्विडिटी को लेके या फिर जो उनको लोन की अवेलेबिलिटी है. अभी अभी सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं कि उनको लोन मुहैया हो. आरबीआई ने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं जिससे कि उनको एक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग एनबीएफसी के जरिए हो सकती है. तो ये बहुत अच्छी सराहनीय कदम है. और ख़ासकर जो लेबर रिफॉर्म्स होनी चाहिए एमएसएमई के लिए, जो फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए कि वो अपनी फैक्ट्रीज में जब भी फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है, जब ज़रूरत है उस टाइम पे लेबर फोर्स को डिप्लॉय कर सकें. ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कोई भी अब ग्लोबल एनवायरनमेंट बहुत ही डायनामिक है. कई बार डिमांड जनरेट होती है, किसी इकॉनमी में किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत है तो फैक्ट्री में ऑर्डर आता है, तो वो कुछ देर के लिए उसको फुलफिल करने के लिए कुछ लेबर वर्कफोर्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके बाद उसकी ज़रूरत नहीं है. तो इस तरीके से, लेकिन वो अगर उसको डिप्लॉय करते हैं तो वो कंटिन्यूशन में उसको नहीं रख सकते. तो ऐसे लॉज जो फ्लेक्सिबल हों, जो फ्लेक्सिबल डिप्लॉयमेंट की तरफ जाएं, मतलब फैक्ट्रीज अपने तरीके से उनको डिप्लॉय कर सकें, ऐसे लॉज की ज़रूरत है. अभी अभी सरकार ने जो 44 लॉज हैं उनको 4 कोड्स में कन्वर्ट किया है. वो एक बहुत सराहनीय कदम है, जिससे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, फैसिलिटेशन होगी, सिंप्लीफिकेशन होगा लॉज में. लेकिन उससे भी और ज़्यादा आगे बढ़ के हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी इन डिप्लॉयमेंट ऑफ लेबर को लेके आना होगा. और दूसरा, जो आपने स्टिमुलस की बात की, खासकर जो जिस तरीके से, जैसे ऑटो सेक्टर है जिसमें बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट डिपेंडेंट है और बहुत सारी जो ग्रोथ है इस सेक्टर की तरफ से आती है, जीडीपी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है. तो इस सेक्टर के लिए जब हम स्टिमुलस की बात करते हैं तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए इसको कैसे इंसेंटिवाइज किया जाए कि मोर एंड मोर प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ जो आगे बढ़ें, जो प्राइस कॉस्ट मार्जिन्स हैं वो मेंटेन रह पाएँ, तो उनको जो अपने यूनिट्स हैं वो कंटिन्यू रखें. तो ऐसे जो पैकेजेस हैं जो सरकार की तरफ से टाइम टू टाइम ऑफर किए जा सकते हैं, तो वो एक सोचने की बात है कि उसके ऊपर कुछ विचार किया जा सकता है. खासकर जो इनके लिए जो प्रावधान होने चाहिए उनके ऊपर एक सोच विचार करके कुछ ऐसा स्टिमुलस दिया जा सकता है. और दूसरा, जो लिक्विडिटी की जब हम बात करते हैं कि लिक्विडिटी, ये ज़रूर ठीक है कि आरबीआई ने लिक्विडिटी क्रिएट करने की कोशिश की है, रेपो रेट को कम किया है, लेकिन उसका ट्रांसमिशन, एक इफेक्टिव ट्रांसमिशन, जो ग्राउंड लेवल पे हम ट्रांसमिशन की बात करते हैं कि क्या वो लिक्विडिटी जो क्रिएट की गई है, जो रेपो रेट कम किया गया है, क्या वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट हुआ, क्या बैंकिंग सेक्टर ने अपने जो रेट्स हैं वो रिड्यूस किए, उनको हमें देखना होगा कि 100% जो ट्रांसमिशन है वो इंश्योर हो. जो एक बेनिफिशरी है जिसको टारगेट किया गया है कि जो इसका जो इफेक्ट है वो ग्राउंड लेवल पे जाए, तो उसके पास पहुंचना चाहिए. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं. चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर. सबसे पहले नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार पर, जहां मिला जुला रुख देखने को मिला है. जापान का निक्केई 225 सूचकांक थोड़ा सा आज बढ़कर बंद हुआ. सिंगापुर के स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.2% की वृद्धि देखने को मिली. चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.1% की वृद्धि हुई. उधर बिकवाली के दबाव में दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.7% और हांगकांग का हैंगसेंग 0.8% घाटे में रहा. इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा कि वे चीन के साथ व्यापार असंतुलन की समस्या को दूर करने के लिए चुने हुए व्यक्ति हैं. हालांकि कुछ अमेरिकी नीति निर्माताओं ने आगाह किया है कि शुल्क संबंधी उनके फैसलों से वर्ष 2020 में अमेरिका की आर्थिक गतिविधियों में 0.3% की कमी
हो सकती है। इस बीच चीन ने उम्मीद जताई है कि अमेरिका शुल्क संबंधी अपनी कार्रवाइयों को रोक देगा। चीन के वाणिज्य मंत्रालय की ओर से यह वक्तव्य जारी किया गया है आज। यूरोपीय शेयर बाजारों की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक नरमी बनी हुई थी। अंतर दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.6%, फ्रांस का CAC 40 0.5% और जर्मनी का डेक्स 0.3% नीचे कारोबार कर रहे थे। Dr. Sharma, we'll just take this discussion back. Asian markets are also looking at a slowdown, and so we talk about India looking at a slowdown too. But we have a quote from Rajiv Bajaj, who says that it's an industry problem. That 5% lower sales does not mean that it amounts to a slowdown. How much do you, first of all, agree with that statement? And if you could qualify, what does he mean by saying that? I mean, I fully agree that sometimes there are sometimes booms and depressions. Economy is sometimes in a cyclical mood, and if there is a structural slowdown, that is dangerous for the economy. But we are not in a structural slowdown. We are only in the cyclical slowdown. That is for the time being, and I believe in the next few quarters we are going to post the good numbers, and our GDP will grow again in the higher trajectory. But at this juncture, how to tackle this slowdown? That is the question at this juncture, that how to create a positive momentum. If we are in cyclical slowdown also, then we have to revive the cyclical slowdown in a shorter period of time. We should not give up much time to come out to the economy to come out from this slowdown. So I believe the statement is very good, and I agree for that. That this slowdown is cyclical, and we have to revive our economy with so many efforts. Firstly, starting from the focus on the small businesses that are the backbone of the economy. okay, now if we look at the monsoon, we were in a deficient monsoon situation, and now we've got surplus suddenly, and that's resulted in floods, and we've lost a lot of crop, and the rates have started to go up for basic commodities. If we look at that as a trigger, do you think that in the coming few months we're going to see food processing industry having trouble, or the common man having trouble? There's going to be an inflation on that back. I mean, I'm not trying to put words in your mouth, but if you could tell me how does it translate? Not at all, because this disruption is creating some price escalation. Not because of the cut in production, because the sowing process is gaining pace. We are up in the sowing process. We are posting a good numbers in the sowing process. So going forward, a good kharif crops are expected in the coming weeks, in the coming like in the end of the September or October. There will be a good kharif crop production. I believe higher than the last year's production, a significantly higher rate than the higher rate than the last year's production. So this price escalation, or sometimes prices go up because of the supply disruption, because of the heavy rains in some regions. So that doesn't mean that prices are going to up in the coming times also. I believe prices will stabilize with the slowing down of the monsoon process. Now the monsoons are also winding up in this month of September. So prices should also stabilize, and going forward with the good kharif crop production, there will be a good growth trajectory in the agriculture sector, good numbers from the agriculture sector that will boost the overall GDP growth. And there is a challenge, how to capitalize on this good food grain production. We should tap the global markets, because we have a good opportunity to export more into the global markets. If we are supported by the monsoon, and there is a good kharif crop production, and overall food production is also in the good number, then we should focus on the export segment, because government has announced various policies for the food and export promotion in the food products. So that should be capitalized and explored in the international market. There is a lot of demand of the food products. There are $1,300 billion imports of the agri and food products, and we are only somewhere between $30 to $40 billion. So we have to increase this trajectory to the level of 100 billion in the next few years. और डॉक्टर शर्मा, दुनिया के किन देशों में आप देख रहे हैं कि भारतीय खाद्य पदार्थ हैं उनके लिए संभावनाएं बन सकती हैं? कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमारे उत्पाद जा सकते हैं?
देखिए, सबसे बड़े मार्केट्स तो यूरोप में है। यूरोप में हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ नॉन टैरिफ बैरियर्स इश्यूज आते हैं। वो WTO के ज़रिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं उनको सुलझाने की। और दूसरा, जो मिडिल ईस्ट इकॉनमीज़ हैं, खासकर जो इधर दूसरे खिते में अगर हम देखें तो एशियन इकॉनमीज़ में मतलब हर जगह फूड की डिमांड जो है वो ये ज़रूर है कि कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा डिग्री का फ़र्क होता है, लेकिन एवरीवेयर वी हैव गुड अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोर्ट आवर फूड प्रोडक्ट्स। So, taking that cue, I think if the demand in India has slowed down, but in the US, we've seen some very interesting numbers coming up. US markets ended higher yesterday following upbeat retail earnings from Lowe's and Target, while investors awaited release of the Fed minutes for further clues on the path of future rate cuts. Big box retailer Target Corporation shot up over 16% after it beat quarterly profit estimates and raised its annual earnings forecast. Following closely behind with an over 11% jump were shares of home improvement chain Lowe's. Together, their shares helped the retail index rise 1.9% and consumer discretionary sector 1.5%, the most among the major S&P sectors. The centerpiece for today will be the release of the minutes from the Federal Reserve's July meeting, when it cut interest rates for the first time in more than a decade. Also, Powell's remarks on Friday will be scrutinized for clues on what more policy makers are planning to boost growth. Meanwhile, Bank of America Corporation Chief Executive Officer Brian Moynihan yesterday played down fears of a potential US recession, saying strong consumer spending could keep the economy growing. So the Dow Jones Industrial Average climbed 240 points or 0.9% to close at 26,203. The S&P 500 rose 24 points or 0.8% to end at 2,924, and the Nasdaq Composite gained 72 points to 8,020. Dr. Sharma, we see that during all this slowdown and all these problems across the globe, we've seen that the US economy is doing pretty good and is in the green. What do you feel that in the coming months, will all these stimuluses and all what the government is trying to do increase the demand for in India for products so that even our markets start to grow? Yes, there is opportunity in the global market, majorly because of the trade war between US and China. We have to capture some share in the US or China in our exports, and our share is also increasing. We have increased our share in the US and Chinese market in our export segment. But going forward, global growth is not that much, I believe, in the strong strength, because global growth was at around 3.9% in 2017, then 3.5% in 18. Now the growth is projected at 3.3%. And the US growth is also very volatile. Sometimes they post the very good numbers in the consumer sentiment, employment creation. Each and everything is in the positive trajectory. But after a few weeks, then they again post some fragile numbers that create the volatility in the markets. So I believe going forward that volatility, economic volatility will continue. But US should focus on the stability of the dialogue between US and China in the trade war segment, because this is going to impact majorly the global trade scenario. If the talks are not settled, if there is escalation in the trade war, then that could impact overall world economic growth majorly, and particularly the growth in the US and Chinese economy. हमारे अपने देश पर क्या असर पड़ सकता है? हमारे लिए कह लें कि कहाँ कहाँ दरवाजे खुल सकते हैं और कहाँ कहाँ हमारे लिए चुनौतियों का सामना पड़ सकता है यदि ये विवाद और गहराता है तो? देखिए, हमारे लिए 7% ग्रोथ एक बेंचमार्क है, वो हमने अचीव कर लिया है, उसके आसपास हम ग्रो कर रहे हैं। लेकिन इसके आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत सारी ग्लोबल मार्केट अपॉर्चुनिटी कैप्चर करनी पड़ेगी। खासकर इसी संदर्भ में अगर यूएस चाइना का ट्रेड वॉर और बढ़ता है, एस्केलेशन आती है, तो उसका ग्रोथ के ऊपर हमारे ऊपर कोई मेजर असर पड़ने वाला नहीं है। ये जरूर है कि हम एक अपॉर्चुनिटी, जो हम ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है, उसको कैसे कैप्चर करना है, वो हमारे लिए चैलेंज है। अपने एक्सपोर्ट्स को कैसे इंक्रीज करें। एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने के लिए सरकार के बहुत ज़्यादा प्रयत्न है, और डोमेस्टिक लेवल पे उसके लिए जो लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, उसको और दृढ़ करना होगा, उसको और स्ट्रॉन्ग करना होगा। जो खासकर जो ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स हैं,
उनको स्ट्रेंथ देने की ज़रूरत है, खासकर जो हमारे डोमेस्टिक लेवल पे जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट हैं, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसको और हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि हमारे एक्सपोर्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबल मार्केट अपॉर्चुनिटी का लाभ प्राप्त हो। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। ईपीएफओ ने 6,30,000 से अधिक पेंशन भोगियों को राहत देते हुए कर्मचारी पेंशन योजना के तहत कम्यूटेशन को फिर से बहाल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिससे वे अग्रिम भुगतान का एक अंश प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना का लाभ ऐसे पेंशन भोगियों को मिल सकेगा जिन्होंने वर्ष 2009 से पहले अवकाश के समय कम्यूटेशन का प्रस्ताव स्वीकार किया था और एक मुश्त राशि ले ली थी। कम्यूटेशन योजना के तहत मासिक पेंशन की 1/3 राशि अगले 15 वर्ष तक काटी जाती है तथा शेष राशि एक साथ दी जाती है। 15 वर्षों के बाद पेंशन भोगियों को पूर्ण पेंशन दिए जाने का प्रावधान होता है। Prime Minister Narendra Modi will be reaching Paris today for Indo-France bilateral talk scheduled in the evening. While speaking exclusively to our correspondent on the eve of this visit, Indian ambassador in France Vinay Mohan Quatra has said that one important aspect of Indo-France relationship in last 4 years is the focus is on time-bound implementation of decisions. A report. आइए हम आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी 2 दिन की नेपाल यात्रा के समापन के बाद स्वदेश आज रवाना हो गए। अपनी यात्रा के दूसरे दिन डॉक्टर जयशंकर ने आज सुबह काठमांडू में राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी से भेंट की। इस अवसर पर नेपाल के विदेश सचिव शंकरदास बैरागी, नेपाल में भारतीय राजदूत मंजीव सिंह पुरी और भारत में नेपाल के राजदूत नीलांबर आचार्य भी मौजूद थे। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर और नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने कल भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 5वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। इस दौरान भारतीय खाद्य संरक्षा मानक प्राधिकरण और नेपाल के खाद्य प्रौद्योगिकी तथा गुणवत्ता नियंत्रण के बीच खाद्य संरक्षा और मानकों पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। And in the oil markets, Brent crude oil rose about $60 a barrel today, supported by a drop in U.S. crude inventories and OPEC-led supply cuts. Although worries about the global economy weighed, U.S. crude inventories fell by 2.7 million barrels last week, more than analysts expected. Still, the U.S. Energy Information Administration also said gasoline and distillate inventories rose. Brent crude futures rose 46 cents to trade at $60.76 a barrel. U.S. crude futures gained 40 cents to $56.08 a barrel. डॉक्टर शर्मा, तेल का जो वर्तमान स्तर पर है उस पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। $60 प्रति बैरल के आसपास है, किस दिशा में जाता दिख रहा तेल फिलहाल? देखिए, इनके तेल के भावों में कोई ज़्यादा आगे ऐसा तो नहीं है कि कोई एस्केलेशन आएगा। खासकर जो हम समझते हैं कि जो ग्लोबल डिमांड कंडीशंस हैं और जिस तरीके से इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज़ का ग्रोथ मोमेंटम है, तो कच्चे तेल के भाव जो है 60 और 65 के बीच में ही रहने चाहिए। अगर कई बार सप्लाई डिसरप्ट होती है तो $65 तक चले जाते हैं, तो वापस ये इनका जो मेन एक सेंट्रल पॉइंट है वो $60 के आसपास ही बना रहेगा आने वाले 1 साल तक लगभग, जब तक ग्रोथ जो ग्लोबल ग्रोथ है वापस अपने हाई ट्रैजेक्टरी में नहीं जाती है। आइए चलें सर्राफा बाजार की ओर। दिल्ली सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की चमक तेज रही। सोने का मूल्य 150 रुपए बढ़कर 38,970 रुपए प्रति 10 ग्राम की नई ऊंचाई पर पहुंच गया। चांदी 60 रुपए बढ़कर 45,100 रुपए प्रति किलो हो गई। चांदी के 100 सिक्कों का मूल्य 91,000 रुपए के पूर्व स्तर पर टिका रहा। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने का मूल्य थोड़ा सा घटा, $1,499 प्रति औंस के स्तर पर आ गया। चांदी $17.09 प्रति औंस दर्ज हुई। बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया, सोने में निवेश के लिए यह समय उपयुक्त होगा या सोने की स्थिति कैसी जाएगी? जी, जिस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है तो हम समझते हैं कि जो गोल्ड प्राइसेस हैं वो वॉलेटाइल तो रहेंगे, लेकिन विद द अपवर्ड बायस इसके प्राइसेस में और तेजी आने की संभावना आसार अधिक है। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर शर्मा। Thank you. Thank you, Dr. Sharma. Before we close, a reminder of the headlines. Falling for the third straight day, Sensex tanks 587 points, Nifty plummets 177 points, Rupee weakens 15 paise against the US dollar. Retirement fund body EPFO restores commutation of pension under the Employees Pension Scheme, and Prime Minister Narendra Modi to reach Paris today. Indo-France bilateral talk scheduled in the evening. And that's it at this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Thank you.